डिस्कस करना है हमको खाली वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या डिस्कस करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, representation of data. यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को आज डिस्कस करना है। कल मैंने ये आपको बताया था कि जो 4 स्टेप हमको डेटा हैंडलिंग में करने हैं उसमें से 1 और 3 ये दोनों हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड में, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। In 8th standard, we have to do these two topics, representation of data and future availability of data. Now, what is the meaning of representation? मैं छोटा सा एग्जांपल देके बाद में मैथ्स पर आ जाऊंगा वापस। कल की तरह पूरा लेक्चर नहीं निकल जाएगा हमारा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आप लोगों की मैथ्स की टेस्ट हुई और उस टेस्ट में आपने जब मुझे आंसर शीट सबमिट करवाई तो मैंने उसमें से देखा कि 2-3 गर्ल्स ऐसे हैं ना तो उसके हैंड राइटिंग इतने अच्छे हैं, इतनी अलग अलग पेन्स का उसने यूज किया हुआ है। ब्लैक पेन का यूज किया, ग्रीन पेन का यूज किया, रेड पेन का यूज, ब्लू पेन का यूज, पेंसिल फिगर्स पेंसिल से ड्रॉ की, स्केलिंग अच्छे से किया है, बड़े बड़े हैंड राइटिंग में और गुड हैंड राइटिंग में। इतना अच्छी तरीके से उसने पेपर लिखा है कि पेपर देख के ना मजा आ जाए कि चलो भाई ये पेपर तो बहुत अच्छे से चेक करना ही करना है। और उसके सामने कोई एक दूसरी गर्ल्स का पेपर सोचो कि वो खाली एक ब्लू पेन से फिगर पेन से ही ड्रॉ की, स्केल उसकी कोई जरूरत ही नहीं, राइटिंग छोटे छोटे निकाले, इतने खराब राइटिंग कि खुद को अगर पढ़ने के लिए बिठाते तो वो भी ना पढ़ पाए। टीचर तो दूर की बात है, जो उसने लिखा हुआ है उसको ही वापस बुला के पूछे कि भाई ये तूने क्या लिखा है तो वो भी ना पढ़ पाए, इतने खराब हैंड राइटिंग है। तो ऐसा कोई पेपर अगर पेपर चेकिंग के दरमियान में आ जाता है ना तो पता है क्या होता है? वो पेपर चेक करने का मन नहीं होता है। इसी को तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू Yes, गेटिंग sir. माई पॉइंट? Yes, sir. क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? ये खाली एक छोटा सा आपकी आंसर शीट का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब देखना है यार, बाहर खाने के लिए जाएंगे ना तो फिर भी हम देखेंगे कि ये लारी वाला है ना उसका सब कुछ अच्छा नहीं है, वो वाला तो देख भले क्वालिटी उसकी खराब हो या कितना अच्छे तरीके से उसने सब कुछ अरेंज किया हुआ है, कितना क्लीन है। वैसे करके हम जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना हम वहां पर जाएंगे। मार्केट में आप निकलेंगे, मान लो कि आपको पोटैटो टोमेटो ऑनियन कुछ भी लेना है तो देखेंगे एक जगह पर तो सब जगह पर साथ में रखा हुआ है। एक होगा कि नहीं भाई उसने एक एक पोटैटो को एक एक ऑनियन को इस तरीके से उसने अरेंज किया हुआ है कि देख के ही आदमी ना दूर से आ जाए कि नहीं भाई यहीं से लेना है। तो इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेशन। Okay, now I am not giving more examples of representation. Here I am giving you examples of representation of data in our mathematics. How can you represent the data? First of all, we have two types of data. First, individual data and second, grouped data. Right? इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कि आपका जो पर्सनल डेटा होता है उसी को तो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल डेटा। और एक डेटा जो होता है उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। मान लो कि मुझे पूरे क्लास का मैथ्स का रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना है, साइंस का रिजल्ट क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, सोशल का रिप्रेजेंट करना है, इंग्लिश का रिप्रेजेंट करना है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। हमारे पास दो टाइप के ये डेटा ऑलवेज होते ही है। मान लो कि आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में आपके पास जो नंबर है वो आपका पर्सनल नंबर है, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल। बट वो सब जाके एक जगह पर जमा हो गया जिसका नाम है आधार, तो वो हो गया आपका ग्रुप डेटा। मान लो कि आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो है आपका पर्सनल, लेकिन वो जब बैंक में जाके जमा होगा जिसको हम बैंक बोलते हैं वो क्या है ग्रुप डेटा, वो सबका डेटा रखती है। वैसे ही स्कूल में आप आएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो है इंडिविजुअल, बट अगर पूरे क्लास का, पूरे सेक्शन का, पूरी स्कूल का रिजल्ट अगर हम काउंट करें तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। दो टाइप के डेटा हमारे पास होते हैं, दोनों को ही हमको रिप्रेजेंट करना है। इंडिविजुअल डेटा को भी रिप्रेजेंट करना है, ग्रुप डेटा को भी रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम देखते हैं अभी। छोटा सा एग्जांपल, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का जो टाइप है उसमें आता है टेली मार्क्स। आपको पता ही है कि टेली मार्क्स क्या है।
पता है कि नहीं है? यस सर। क्या होता है टेली? चलो कोई मुझे जल्दी से 2 मिनट में बता सकता है? सर पक्का याद नहीं है। हाँ, जितना बताओ उतना बताओ। कौन बोल रहा है कि पक्का ही बताओ, नहीं बताया तो मार देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। Any girls, please give me answer. What is the meaning of telemarks? You already do telemarks in 6, 7, 4th standard. Telemarks is basically known as tabular arrangement of our data. Which type of arrangement? Tabular. Tabular means we can टेबल form all the data टेबल in one table, right? फॉर यस एग्जाम्पल, मान लो कि आप अभी कितनी गर्ल्स प्रेजेंट हो? 15 गर्ल्स एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं कि 15 गर्ल्स आप प्रेजेंट हो। 15 गर्ल्स जो प्रेजेंट है ना, उसका मैंने ब्लड ग्रुप निकाला कि चलो भाई सबसे पहली जो गर्ल्स है उसका ब्लड ग्रुप मुझे मिला ए, मैंने जब टेस्ट किया। दूसरी कोई गर्ल्स थी उसका ओ मिला, फिर ए भी मिला, किसी का बी मिला, किसी का फिर बी मिला, फिर बी मिला, ओ मिला, ए बी, ए, बी, ए, ए, ओ, ओ, ए बी, ए, बी, 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 ए। फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी भी गर्ल्स प्रेजेंट हो उसको, उसका जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप का डेटा मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। सबको मैंने पूछा कि हाँ भाई तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? सर ए। सर तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? तो सर बी। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? तो ए बी। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? तो ओ। इस तरीके से मैंने सबका ब्लड ग्रुप का जो डेटा था वो मैंने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया। नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। So first I am representing this data in telemarks. How can you represent in telemarks? So just in telemarks you have to write down 3 columns. First column things, then second column telemarks, and the third column it is known as frequency. What is frequency? I just explained. Okay, I am explaining you what is frequency. Don't worry. Okay, things. How many things in our data? 4 things we have. Which 4 thing? A blood ए group, ए बी बी B blood और group, AB blood group, ए बी and O blood group. ओ Now what we have to do? We are just counting. For example, if first is A, we are drawing one vertical line. And then we have O, we are cutting O and draw one vertical line. Then AB, we are drawing one vertical line in AB. Then you can see 3 times B, so it means 1, 2, 3 B. Then O, then AB 2 times, so 2 times AB. Then AA 2 times, 2 times AA. Then OO 2 times. Then AB, okay, then A, then B 4 times. Okay, now you can see B 4 times. It means here 3 lines are there. One more line we are drawing and one slant line we have to draw. So it means total it is 5 lines. Now we have to represent 2 lines. Are you getting my point? Yes, sir. यस यस सर। Now you can see only A. So A means one slant line. Now, after drawing a telemarks, now we have to make a frequency. Frequency is nothing but number of lines in each case. For example, in case of A, we have total 5 lines, so it means frequency of A it is 5. In case of B, we have 7 lines, so it means the frequency of B it is 7. And then
In AB, we have 4 lines. It means frequency of AB, it is 4. In case of O, we have 4 lines. So it means frequency of O is 4. Now we get this representation. It is known as tabular representation, tabular arrangement of any data. It is known as tally marks. Are you getting my point, girls? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now sir. first write down this example in your book, make a table and solve this question. And then after I represent this data into graph base. So please write down fast. સર ફર્સ્ટ લાઈનમાં એ એન્ડ બી બંને ભેગું છે કે એ એન્ડ બી બે અલગ અલગ છે? કઈ લાઈનમાં બેટા? ફર્સ્ટ લાઈનમાં કઈ જગ્યાએ? ફર્સ્ટ અહીંયા લાસ્ટ વર્ડ લાસ્ટ નહીં, બંને સેપરેટ છે. એ કોમા બી છે. તો તમે એ ખાલી એકવાર નથી લીધો અને એ બી એકવાર એક્સ્ટ્રા લઈ લીધો. Okay, wait. We are counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. 5, 7 years exactly. એક આપણે કાઉન્ટ નથી કર્યો. ચલો જોઈ લઈએ. A1 time, A2 time, 3 time, 4 time, 5 time and 6 time. A we have 6 time only. So it means in frequency we are making change. It is 6. Okay. સર બી પણ 8 વાર છે. કેમ? ઈ એ બી વાળો બી નથી લીધો. સાંભળ એ બી એ વાળા એ કેટલા છે? 1, 2, 3. 3 છે એ બી વાળા. કેટલા છે? 3 ને તો એ સર બી 4 3 છે, લીધા. તમે 4 લીધા છે. બરાબર, તો પછી આપણે મિસ્ટેક છે. બી વાળા કેટલા છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B7 બરાબર છે. ઇટ મીન્સ આ સરસ. લાસ્ટમાં જે આપેલું છે ને તમને, આ એ બી જ થયું બેટા, એ નહોતું. એ બી જ છે લાસ્ટમાં. એટલે આને તમે એ બી કરી દો એટલે એ બી ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 4 થઈ ગયા ને. અને એ જે છે 5 થઈ ગયા. ઓકે. ઓકે સર. સર હવે થઈ ગઈ બધી કરેક્શન, તો સ્ક્રીનશોટ લો. સ્ક્રીનશોટ નથી લેવાનો બેટા, લખો તમે. ત્યારે જો ત્યારે સ્ક્રીનશોટ શું કરો છો તમે? ક્લાસરૂમમાં બેઠા હો તો સ્ક્રીનશોટ લેવાના તમે? ના મેથ્સ બેટા સ્ક્રીનશોટ લીધે ન આવડે, લખે આવડે. તમે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા સાવ. લખો ફટાફટ.
सर लखाई सर रिटर्न सर कंप्लीट. Okay, chalo. Now we are representing this data into graph. Okay. See here. We know that in a graph page we have to draw two lines, one vertical line and one horizontal line. The vertical line is known as y-axis. The intersecting point of these two lines are known as origin and it is O, right? And it is y-axis. Clear all of you? yes Yes. sir. Yes, sir. Okay. Now you can see whenever you draw a graph, you have to remember these three steps. First step, you have to write down the name of x-axis, y-axis and origin. Clear all of you? First we have to write down the name of x-axis, y-axis and origin. Okay? Now second thing, whenever you represent a data on x-axis and y-axis, we are representing data with equal distance. What is the meaning of equal distance? For example, you can see x-axis. In this x-axis, if I am representing data here, you can see first data I am representing here. Now you cannot second your entry represent after too much distance. You have to take equal distance. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, it means you have to take equal distance. If you are taking equal distance, then your graph is correct, otherwise it is not correct. And third thing you have to remember, whenever you make a representation of data on graph page, you have to write down scaling of x-axis and y-axis. Okay, what is the meaning of scaling? We know that graph page is two small piece of paper, right? On this graph page we are representing kilometers, speeds, marks, subjects, age, year, etc. So we have to write down the scaling. What is the meaning of scaling? Scaling means, for example, it is 1 centimeter cube, and here we are representing year. We can say that 1 centimeter is equal to 5 years. For example, uh, we are taking the gap of 5 years. It is known as scaling, nothing else. Clear all of you? Clear all of you? જ્યારે Yes. સ્કેલિંગ આવશે Yes. ત્યારે જો હું તમને વધારે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દઈશ તમ તારે, બરાબર ને? એટલે હમણાં ખાલી જસ્ટ ખાલી તમે આ ત્રણ સ્ટેપ ને ખાલી તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કયા Yes, કયા સ્ટેપ sir. કીધા ફરીવાર? કયા કયા સ્ટેપ કીધા? X-axis, Y-axis, and origin, then ઓકે equal distance, and ઓકે scaling of X-axis and Y-axis. ઓકે. If you remember these three steps, then your graph will be considered. It is not correct, will be considered. અગર આ ત્રણમાંથી કોઈ એક વસ્તુ બી તમારી રોંગ છે ને, તો કોઈ બી ટીચર તમારો ગ્રાફ કન્સિડર બી નહીં કરે, ડાયરેક્ટ અને રોંગ કરી દેશે. તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં જ્યારે જશો ને બોર્ડમાં, ત્યારે બોર્ડની અંદર અગર આ ત્રણ વસ્તુ કરેક્ટ હોય તો જ તે આગળ ક્વેશ્ચન તમારો કન્સિડર થાય અને ચેક થાય અને પછી એના ઉપર તમને માર્ક્સ મળે. જો ઈ ત્રણમાંથી એક બી Yes. વસ્તુ રોંગ હોય તો ઈ લોકો ડાયરેક્ટ ઈ ક્વેશ્ચનને કટ કરી દે કે ભાઈ આ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટલી રોંગ છે, ભલે તમે સાચો કરેલો છે, પણ આ ત્રણ વસ્તુમાંથી કોઈ ખોટી હોય એટલે ઈ ગ્રાફ તમારો કન્સિડર નો થાય. Okay, okay, now see here. Yes. Now
we have two uh, information in our tabular form. First thing, it is the blood group, and second thing, the number of students. It is known as frequency, right? So we are writing here on the x-axis and y-axis. We have to write down. Here we are writing the blood group. Okay, for example, I am taking a distance of 2 centimeter. First, I am writing here A blood group. Then again, we are taking equal distance and write down B blood group. Then we are taking equal distance. We are taking AB blood group. And then we are taking the distance of 2 centimeter and we are writing O blood group. Clear all of you? Clear all of Yes, you sir. this first thing? Yes or Yes. no? Sir. Okay. Yes, sir. Now on y-axis we have to show the number of students. So we are writing here number of students. Okay. The maximum number of student in our table you can see it is 7. So we are taking 1 centimeter is equal to 1 student. See here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, now we are writing the scaling here. See, we are taking on x-axis 2 centimeter is equal to blood group. જે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય ઇન્ફોર્મેશન આપણે લખશું. And on y-axis 1 centimeter is equal to 1 student. Clear all of you? What is the meaning of scaling? Yes or Yes, no? yes, Okay, now sir. see. Now see here. Now we have to represent the data in our graph page. See. Okay, now you can see in A, blood group A having 5 students. So we are representing A at 5. Okay. And then blood group B having 7 students. Right. 7 students. So you can see in blood group B it is 7 students. In AB blood group there are 4 students. And in O blood group there are 4 students. Now make a bar. What we have to make? Bar. Bar. Now if you want to fill this bar, it is your choice. Okay, just we have to represent this data in our bar graph. It is our question, but it is not necessary to fill this all the bar. If you make a design, if you want to make a design like this, for example, like this, you make a design. Okay, so it is known as a bar graph in which you can see every bars are single, so we can say that it is single bar graph. Which bar graph? Single bar graph. Single bar graph. Exactly. Single bar graph. Okay. Now draw this graph in your book with pencil and scale. Please remember the 3 steps of your graph and then you have to represent this data. Start. Okay, sir. In next lecture, we will start exercise 5.1 and in this exercise, we will quickly complete all the question because of the whole concept I explained.
सर दो एक जैसे ही है ना, थ्री तक ही जाता है ना। सर सर लास्ट में दोनों एक जैसे ही है ना, थ्री थ्री पे ही जाते हैं ना। 3 नहीं शिफा, 4 ऊपर। थर्ड ऊपर જાય છે। નીચે નીચું થઈ ગયું છે, પછી 4. સર ડન. हाँ बेटा, रिटर्न ऑल ऑफ यू। યસ સર. Okay, now you have to draw this graph and this tally marks in your homework 2 times. Okay, and tomorrow we will ઓકે start સર. exercise. Okay. Okay, chalo, bye all of you, have a nice day. Bye, sir. બાય સર। બાય સર, હેવ Bye, અ નાઇસ sir. ડે. Have a nice day. મારા સ્ક્રીનશોટ મમ્મીને મોકલ્યો।